Hi everyone and welcome back to my video and another study vlog. So firstly मैं हर दिन 5 बजे नहीं उठती हूँ. There are some unique days like today जब मैं सुबह उठ गई because I have a ton of tasks to do. So I am having a test on Monday on sensory organ chapter and circulatory system, and I have to complete my notes of sensory chapter and also learn it. By the time I give you some points on how you should approach this anatomy and physiology subject. सबसे पहले जो anatomy and physiology होती है दोनों को साथ में पढ़ना होता है, अलग अलग नहीं पढ़ना होता है. So I follow a simple 3-step rule. First, I clear my basics as they play a very vital role in this subject. I attend lectures attentively and make my own notes in my own language. Revise all the teach topic on the same day of college or any lecture which I have attended. I study from books as much as I can. And yeah, the most important thing is refer to the diagrams and the 3D models for the clear understanding. So here is a bonus tip. When you are attending a lecture or starting a new chapter, have a mindset कि मैं इस चैप्टर को इतना अच्छे से पढ़ूंगी कि बाद में मुझे बस रिवीजन की ज़रूरत पड़े एंड आई एम डन विद द चैप्टर. And now I will give you some tips to score high in anatomy exam which my teacher told me all the techniques. First, you should always draw a label diagram with the theory and write thoroughly about the topic. Third, always write in points. Like, for example, if you are writing the physiology of vision, first you draw the visual pathway, its diagram, then explain about each path and their function. And yeah, make mind maps as much as you can. Yeah guys, I have completed the notes of my this sensory organ वाला chapter. Skin के notes अभी बचे हुए हैं and now I'm going to learn about this. I have to tell you something about my perspective of studying this anatomy and physio. So I'm loving this subject. I'm loving it thoroughly. I am falling in love with the I have learned so far, the cardiovascular system, the nervous system, the sensory organs. I have loved it. I know anatomy is very hard. For most of the student, it is hard, and it is hard for me. It is hard, of course. It has a lot of things to remember, a lot of terms to remember, and a very tongue twister and difficult words to understand. But I am loving learning about the human body. The study plays a very vital role in my life. Firstly, I flex a lot about my knowledge. Okay, I like flexing my knowledge, and secondly, addiction of knowledge is very insane. Like I used to help many of my friends at the last minute back in the school days. जब हमारे पेपर होते थे तो लास्ट मिनट में पढ़ाने वाली फ्रेंड मैं ही थी. आई हेल्प माई कजन्स एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता था उनका पर्सपेक्टिव जानना किसी भी एक टॉपिक में. लाइक उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो कैसे क्वेश्चंस पूछते थे. आई लव दैट और उससे मेरी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती थी. एंड थर्डली, इन माई होल लाइफ आई गेट वैलिडेशन एंड अटेंशन बिकॉज ऑफ माई नॉलेज एंड बिकॉज आई वॉज अ टॉपर इन माई स्कूल. एंड दिस नॉलेज एंड स्टडी ऑल्सो बूट्स अप माई कॉन्फिडेंस. लाइक जब 2024 में मैंने नीट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया एंड देन 2025 में भी मैंने नीट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया, मेरा कॉन्फिडेंस इज़ लाइक ज़ीरो. इट्स लाइक हेल ज़ीरो. बट अब मैं कॉलेज जाने लग गई हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस भी अब बूस्टअप हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ओनली. सो द मैसेज आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज़ बी पॉजिटिव टूवर्ड्स द स्टडिंग. इफ़ यू आर स्टडिंग, प्लीज़ उसको पॉजिटिव वे में लेके पढ़ो. ऐसे मत पढ़ो कि ओ माई गॉड मुझे ये पढ़ाई करनी है, लाइक दैट. पॉजिटिव वे में अगर तुम करोगे तो स्टडी भी तुमको फिर आगे जाके एक पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगी. Guys, please tell your perspective also, how you feel about studying. Being said, now let's get back to study. I hope this little yapping section gives you some confidence and some motivation. So go and study. And guys, please make a habit of writing in the initial phases of your first year as it will help you a lot in the exam hall. क्योंकि वहाँ पे इतना सारा लिखना होता है and the time is limited. And read your books as much as you can because at last you have no time to review them. So read them thoroughly and also revise your notes multiple times because revision is the key. So I have completed most of the task for today. मैंने ईयर वाला और वो सॉरी ऑल फैक्शन एंड गस्टेटरी दोनों कंप्लीट कर दिया है पढ़ के. रिमेंबर मोस्ट ऑफ द थिंग्स बट अभी मैं इन सब चीज़ों को एक बार रिवाइज़ करूँगी, एक बार अभी एक बार सुबह एंड देन देखती हूँ मैं मेरा टेस्ट कैसे जाता है. आई विल लेट यू नो.
And that's all for the video. I hope you like the video, and this video gives you a little motivation to start your study. I will see you in the next one. Bye.